We'll continue with the electrochemical cell construction. So question is the same. Construct electrochemical cell between number one, Mg2 positive / Mg and Zn2 positive / Zn half cells. Number two, I can write the equations for them. Mg2 positive plus 2 electron gives us Mg. E naught is minus 2.38. Zn2 positive plus 2 electron gives us Zn. And E naught is equal to minus 0.76 volts. Ag positive plus electron gives us Ag, and E naught is plus 0.80 volt, and Fe3 positive plus electron gives us Fe2 positive. This is the data. Okay, now construct the first one. पहले वाला कंस्ट्रक्ट करें और वही तरीका है. चलिए मैं रिमाइंडर करा देता हूं, इधर देखें. पहला मैं कर देता हूं. मैग्नीशियम इंटू मैग्नीशियम आयन, जिंक इंटू जिंक आयन. दोनों कौन से हैं? मेटल इंटू मेटल आयन. ओके, किसी साइड पे किसी को भी लिख सकते हैं. सो मैंने जिस तरह लिखा हुआ है उसी को फॉलो करता हूं. मैग्नीशियम वाला इधर, जिंक वाला इधर. अब मेटल इंटू मेटल आयन है तो इलेक्ट्रोड इसमें मैग्नीशियम का होगा, राइट. और नीचे सोल्यूशन कोई भी मैग्नीशियम का एक्वस सोल्यूशन, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट एक्वस हो सकता है. क्या कॉन्सेंट्रेशन होगी इसकी और टेम्परेचर कितना होगा? ओके, सिमिलरली व्हाट अबाउट दिस? यस, जिंक इलेक्ट्रोड. Any aqueous solution of zinc sulfate, 1 mole per dm cube, 25 degrees Celsius temperature. Okay, this is magnesium. Now we have to connect them with the wire voltmeter and salt bridge. Right? Now, if you look at this, we have to decide which one has to, because in electrochemical cell, one side should undergo oxidation, one side should undergo the reduction. We know these values that has been quoted to us, they are the reduction potentials. So anyone who's a bigger value shows more potential to undergo the reduction. So out of these two, which one is bigger? Excuse me. Minus 0.76 is bigger than minus 0.238. So zinc is undergo reduction, having more reduction potential. And this is undergoing what? Okay. And then reduction वाले को क्या बोलते हैं? Cathode. Red cat. Oxidation वाले को क्या बोलते हैं? Anode. In this electrochemical cell, anode is negative and cathode is positive. So that shows the movement of electrons from this side to this side. Okay. And then you have to reverse the equations as well. Reduction वाले तो as it is रहेगा. Zinc ions undergo the reduction at cathode, but at anode the magnesium undergoes oxidation. So magnesium metal. So you have to reverse the equation and write it down. And then we have to write the overall equation for this. Okay, by adding these two equations. If you add these two equations, you can see
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी बैलेंस्ड है और ऑपोजिट साइड पे वो कैंसिल हो गए. So overall equation is Mg plus Zn2 positive gives us what? This is the overall equation. And what is the E naught of cell? Reduction minus E naught of oxidation. What is the reduction value? What is the oxidation value? Right, so minus minus plus हो गया. Can you check with the calculator? Minus 0.76 plus 2.38. This is the electrode potential, cell potential, E naught of cell. Is it clear? Okay, this is how you construct, label, draw. ये salt bridge है. Okay. And this is how the movement of electrons, cathode label, anode label, everything is labeled. Okay. Now you have to do it. Okay. Is it clear? Anything? Any doubt? Okay. Then I'm going to give you two more cells. Number two is इसमें एक और भी ऐड कर देता हूँ. Cu2 plus gives us Cu, gives us Cu. E naught is plus 0.34. Number two is Cu2 positive slash Cu and Ag positive slash Ag half cells. फिर है Fe3 positive slash Fe2 positive and Zn2 positive slash Zn half cells. और फिर है Fe3 positive slash Fe2 positive and Cl2 slash 2Cl negative half cells. हर एक लेबल करना है. एनोड कौन है, कैथोड कौन है, करंट का फ्लो किस साइड पे है, सेल पोटेंशियल कितना है. Give it a shot. You have 5 minutes.
कौन कह रहा है? नहीं, सुबह एक ही है।
Let's draw them. तो ड्रॉ करें. Okay, the first one was copper into copper and silver into silver. किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी रिडक्शन हो रही है, पहले आप बताइए. नो, आई थिंक दिस इज रॉन्ग. इसकी वैल्यू है 0.80. इसकी वैल्यू है +0.34. तो किसकी ऑक्सीडेशन होगी, किसकी रिडक्शन होगी, बड़ी वैल्यू कौन सी है. तो ये रिडक्शन होगा, ये कैथोड होगा, ये ऑक्सीडेशन है, ये एनोड होगा, ये कैथोड होगा. सो करंट इधर से इधर फ्लो करेगी. जो बड़ी वैल्यू है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखना, जो भी बड़ी वैल्यू है, ओके, दैट अंडरगोज रिडक्शन मैथमेटिकली, जो भी बड़ी है. और जो छोटी वैल्यू है, दैट अंडरगोज ऑक्सीडेशन मैथमेटिकली. ओके, गॉट इट. नेक्स्ट. So correct it. Did you correct it? Salt bridge and all that, you know. Okay. What is the E naught of cell? Zero point. Okay. Plus na. Next. Next. What about this? These two. हाँ, इसमें जो एनोड है वो भी किसका है, ये जो कॉपर का था. और इसमें जो कैथोड है वो किसका था, सिल्वर का था. ओके, व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वन. एक में. यस, दैट्स राइट. दिस इज ऑक्सीडेशन, दिस इज रिडक्शन. क्योंकि ये वैल्यू 0.77 है और ये वैल्यू कितनी है, -0.76. इलेक्ट्रोड किसके हैं वो बताएं. जे. ये क्योंकि डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेल है, तो इसमें प्लैटिनम इलेक्ट्रोड लगेगा. ओके. और करंट किधर से किधर फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम जिंक टू आयरन. ओके. एंड व्हाट अबाउट द लास्ट वन. ओके, लास्ट वन वाला मैं बना देता हूं. अगर ये आयरन इंटू आयरन है, इसमें कौन है, Fe2 पॉजिटिव एक्वस एंड Fe
3 पॉजिटिव है, उसका मिक्सचर है। ओके, इक्वल कॉन्सेंट्रेशन। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रोलाइट। और इसमें रॉड किसका लगेगा? प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। दूसरी तरफ आ जाए, क्लोरीन वाले में क्या होगा? आप कहते हैं वो तो ग्लास जैकेट के थ्रू क्लोरीन गैस पास होगी, ऐसे ही है। यहाँ Cl2 गैस 180 m, and then here is the platinum electrode. Okay, right? ये और यहाँ कौन होगा? HCl aqueous 1 mole per dm2, 25 degrees Celsius. Okay, and then connect it with the wire voltmeter and salt bridge here, and then you connect it with the अब इसमें इधर हो रही है ऑक्सीडेशन, इधर हो रही है रिडक्शन। ये है कैथोड, ये है एनोड, ऐसे ही है। कैथोड पे क्या है? व्हाट इज द चार्ज एट कैथोड? पॉजिटिव। व्हाट इज द चार्ज एट एनोड? नेगेटिव। तो करंट इधर, इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर फ्लो करेंगे। ओके, सो ओवरऑल इक्वेशन क्या बनेगी? ये एनोड है ना, इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, तो ये हो जाएगा Fe2 पॉजिटिव गिव्स अस Fe3 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, और ये क्या होगा? Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स अस 2Cl नेगेटिव। ओके, तो फिर दोनों को ऐड करने से पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करने होंगे। यस, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बन जाएगी 2Fe2 पॉजिटिव गिव्स अस 2Fe3 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये बन जाएगा Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स अस 2Cl नेगेटिव। इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये इससे कैंसिल हो गया। 2Fe2 पॉजिटिव प्लस Cl2 गिव्स अस 2Fe3 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। Got it? Okay, next is salt bridge. What is the role of salt bridge? It is a U-shaped glass tube filled with strong electrolyte, right? And role of salt bridge is to maintain electrical neutrality of two electrolytes by the movement of ions. आयंस की मूवमेंट से अब सुने क्या होता है, इधर सुने, इसी की मिसाल ले लेते हैं। इसकी आप कह रहे हैं इधर ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन में यहाँ मैग्नीशियम आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं बहुत सारे, एंड वी हैव टू गेट रिड ऑफ देम, otherwise they are going to change the electrode potential here.
or they are going to clog this surface. ठीक है, we have to get rid of them. उस साइड पे क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है. So a lot of zinc ions are being discharged. So यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो रहा है, वहां पॉजिटिव चार्ज कम है. So instead of getting rid of, throwing it out, हम इस सॉल्ट ब्रिज के थ्रू मैग्नीशियम आयन को इधर मूव कर देंगे. उससे क्या होगा, द एनी पॉजिटिव चार्ज दैट इज एक्स्ट्रा प्रोड्यूस्ड हियर travels to the other side and replaces any positive charge that has been consumed, the zinc ion over there. So that maintains the electrical neutrality. और other way round भी हो सकता है, अगर इधर से सल्फेट है, अगर आप उसको इधर से इधर ट्रैवल करा दें तो भी यही हो सकता है. So this is how they work. They move the ions from one side to another side where the positive is more or where the negative is more to maintain the electrical neutrality, right? But the electrons only move through the external circuit. They can't let the electrons to move. So ये है role of salt bridge. कि एक साइड पे क्योंकि ऑक्सीडेशन से इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन जनरेट हो रहे होते हैं, दूसरी साइड पे रिडक्शन से पॉजिटिव आयन कंज्यूम हो रहे होते हैं. So they have to move positive ion from one side to another side or negative ion from that side to that side. Okay? अगर सल्फेट इधर से इधर कर दें तो भी काम हो जाएगा, और अगर मैग्नीशियम इधर से इधर कर दें तो भी काम हो जाएगा. सो दिस इज हाउ दे मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी. यानी शुरू का जो एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट हुआ है ना बिटवीन मैग्नीशियम एंड मैग्नीशियम आयन, और इसी तरह जिंक इनटू जिंक आयन, ये उसको मेंटेन करता है. ठीक है, और इन द मीनवाइल द इलेक्ट्रॉन्स कीप फ्लोइंग थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट, राइट. इलेक्ट्रॉन्स कैन, सो ये लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट मूव थ्रू द, इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट मूव थ्रू द salt bridge. सॉल्ट ब्रिज से इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर सकते, राइट. नेक्स्ट, राइट, दिस इज हाउ वी कंस्ट्रक्ट द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. एंड स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की डेफिनेशन देखिए, कल हमने लिख ली थी, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल बिटवीन टू हाफ सेल्स. ओके, और अगर इनमें से कोई एक भी जो है ना वो ना हो अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, तो आपको पता है ये नहीं होता, राइट. अब इसके ऊपर सवाल देखते हैं. लुक एट दिस. ये देखो बच्चे, इसको लेबल करना है. ये अब इसमें ना ये उल्टा सवाल है. उल्टा सवाल से क्या मुराद है,
अगर मैं आपको, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू फर्स्ट, फिर मैं क्वेश्चन देता हूं करने को। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, ये देखो, अगर मैं आपको ये फाइनल इक्वेशन दूं, ये वाली, और आपको कहूं कि ये कौन से दो हाफ सेल्स थे, तो क्या आप बता सकते हैं? आप कहते हैं कि ये था डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट हाफ सेल है ये, जिसमें Fe2 पॉजिटिव और कौन मिक्स हुआ है? Fe3 पॉजिटिव। और दूसरा कौन सा था? यस, Cl2/2Cl नेगेटिव। और इससे वापस आप कंस्ट्रक्ट करें दो हाफ सेल्स, ये भी तो हो सकता है ना। या इसी तरह अगर मैं ये इक्वेशन दे दूं आपको, ये आप बता सकते हैं कौन से दो हाफ सेल्स से ये ओवरऑल इक्वेशन आई है? मैग्नीशियम इंटू मैग्नीशियम आयन और जिंक इंटू जिंक आयन। समझ आ रही है? तो कभी कभार एग्जामिनर ये भी करते हैं, अब जैसे ये क्वेश्चन इसका है, आपने जल्दी से करना होगा, वी हैव 5 मिनट्स। ये कह रहे हैं ये इक्वेशन है, इक्वेशन को अपने पास लिख ले, Cl2+2Fe2 पॉजिटिव gives us 2Cl नेगेटिव प्लस Fe2 पॉजिटिव। अब पहले आप इस दोनों हाफ सेल्स को पहचाने, ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की इक्वेशन है, तो कौन से दो हाफ सेल्स होंगे? देख, स्टेट हाफ सेल होगा। अब उस हिसाब से इसको लेबल करना है। अब लेबल करें उस हिसाब से, ए क्या होगा, बी क्या होगा, सी क्या होगा, डी क्या होगा और ई क्या होगा? A is what? Cl2 gas. B is what? HCl aqueous or any 1 mole per dm cube chloride ions, 25 degrees Celsius. C is what? E is what? Yes, a mixture of equal concentration of Fe3 positive and Fe2 positive. D क्या है? Platinum electrode. अब इसमें अगर ये +1.36 हो और ये 0.77 हो, तो किसकी ऑक्सीडेशन किसकी रिडक्शन होगी? रिडक्शन वाला पॉजिटिव हो गया, इसकी ऑक्सीडेशन होगी, ये क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। तो करंट किधर से किधर फ्लो करेगी? डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? ये बताना। क्लियर है? दिस इज ऑल, वी आर गोना स्टॉप इट हियर। नेक्स्ट हम अगले पार्ट में इसकी कैलकुलेशंस करेंगे। कोई सवाल है तो पूछ लें। थैंक यू।